Now we'll have one more sum जहाँ पे more than one level data is given. Question number 4. The monthly budget for a manufacturing overheads of a concern for two-level activity are as follows: 60%, 100%, और units भी दे रखे तो that's not a problem. Wages, consumable, maintenance, power and fuel, depreciation, insurance. You are required to what? Indicate which of the items are fixed, variable and semi-variable. पहले ये बताओ. दूसरा, prepare a budget for 80% capacity. And तीसरा, find total cost both for fixed and variable per unit at 60%, 80% and 100% capacity. तो आप कर सकते हो. Time given 2 minutes. नहीं 2 minutes नहीं 5 minutes. बरोबर ना, कर सकते हो ना. Yes, sir. मैं आपको टफ वाला बता देता हूँ. Sir, power and fuel and depreciation is fixed. Okay. वेरिएबल और सेमी वेरिएबल आप ढूंढ निकालो तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस. पावर नहीं. डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस आर फिक्स्ड. चलो चालू हो जाओ. Wages and consumable are variable. Okay. Yes, sir. Maintenance Yeah, semi-variable. Yeah, you are right. You are right. You are right. Wages is पक्का. Yeah, wages and consumables are variable, but only these two. So you mean to say maintenance and power and fuel are semi-variable? Yes, sir. Let me check. Okay. Yeah, you're correct. So our first question is ready. Depreciation and insurance is fixed. Wages and consumables are variable. Maintenance and power and fuel are semi-variable. First question is done. Second question. I can do actually second question and third question together only. I can do second question and third question together only. Or else what you can do is you can keep separate variable for 100%, then 80%, 60%, 80% and 100%. First we'll find variable. Under variable, what all things will come? Wages will come, consumables will come,
Then variable maintenance will come. Variable power and fuel will come. Total variable cost. Okay. Then fixed cost में fixed maintenance will come. Fixed power and fuel will come. Depreciation will come. Insurance will come. Total fixed cost. So I'll get total cost. Okay. I can do depreciation and insurance 4,000, 4,000, 4,000. I can do insurance 1,000, 1,000, 1,000. Rest I have to find, right? So how much time give to find this all? Yes. 10 minutes. Oh, 10 minutes. Oh my God. Madam. No. This is very incorrect. Okay, maximum 5 minutes. Maximum 5 minutes. It should not take more than 5 minutes. Madam, your speed should be faster. Anyways, chalo, start. I will start. Wages per unit we need to find 1200 upon 600. That is 2. So 1200, 1600 and 2000. Consumables 900. I think it is 1.5. 900 upon 600 is equal to 1.5. So 800. So that will be 1200 and this will be 1500. Now maintenance, variable maintenance we'll have to find per unit. Change in maintenance cost. Yeah, how much is maintenance cost change? It is 1500 and 1100, that is 400. Yes, 400 sir. divided by 400. So that means variable maintenance per unit is 1 rupee. Hello, Sinaji, Madhvi, did you get Yes, this? sir. It's Yes, very sir. simple. 600, 800, 1000. Now let me find the fixed cost. Fixed cost I will have to select at one level. I am selecting at 1000. At 1000 units, fixed cost is 1500 minus 1000. That is 500. 200. Do let me know if you didn't understand. 500, 500, 500. बताओ अगर नहीं समझा तो Yes, very good. कैलकुलेशन. Yes, sir. ओके, सिन्हा जी आपको क्या नहीं समझा? वेरिएबल पर यूनिट नहीं समझा क्या फिक्स कॉस्ट नहीं समझा? सर वेरिएबल पर यूनिट में नीचे 400 कैसे आया सर डिवाइडेड बाय? ओके, बताता हूँ बेटा. दिस इज 1500 माइनस 1100 बरोबर. Yes sir, that And is this okay. is 1000 minus 600 units. 1600. Okay, okay sir, good. फिक्स कॉस्ट समझा? Yes sir. ओके. ना अभी मैं आगे बढ़ता हूँ.
द सेम चीज मैं करूंगा अभी पावर एंड फ्यूल वेरिएबल 2000 माइनस 1600 400 बाय 400 ये भी इसका भी वेरिएबल पर यूनिट इज 1 तो 600 800 1000 एंड पर यूनिट अभी फिक्स कॉस्ट ढूंढते हैं अभी एट 600 यूनिट ढूंढते हैं चलो फिक्स कॉस्ट इज at 600 power and fuel is 1600 minus 600 so that means 1000 fixed cost is 1000 understood hai Yes, sir. okay now total up कर दीजिए 1200 plus 900 plus 600 plus 600 that comes to 3300 1600 plus 1200 plus 800 plus 800 ये हो गया 4400 और ये होगा 5500 ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि 2020 का डिफरेंस है ना सर ये वो तीन 5400 या 4400? क्या आई एम सॉरी क्या बोल रहे हो मेरा सेकंड टोटल वाला सर? चेक करो सर टोटल मेरा टोटल करेक्ट है Yes. Yes, sir. मुझे ऐड अप करना है 4156 Yes, sir. 7500 तो 9800 10900 एंड 12000 ये मेरा आंसर है करेक्ट है Yes, sir. यस लेट्स गो अहेड नाउ यस ये क्या आपको भी ये आंसर्स आए क्या आपको भी ये आंसर्स आए No, Yes, sir. sir. ओके तो जरा प्लीज रेक्टिफाई कर लीजिए जो आपके मिस्टेक्स हैं क्या आपको आपके मिस्टेक्स पता चले Yes, sir. थैंक यू आगे बढ़ो अभी मैं Yes, sir. या so now we'll go ahead we'll do the third part they want per unit 600 60% 80% and 100% ओके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है सर
क्या आया 3300 डिवाइडेड बाय 600 तो 5.5 5.5 5.5 पर यूनिट सेम रहता है सर वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट का टोटल अमाउंट सेम रहता है, कितना है वो 6500 6500 divided by 600 so that comes to 10.83 6500 divided by 800 so that comes to 8.125 and 6500 divided by 1000 6.5 total cost is 9800 9800 divided by 600 that comes to 16.33 then यहाँ पे कितना है 10,900 divided by 800 that comes to 13.625 और ये तो मुझे क्लियरली लग रहा है 13 नहीं 12 लग रहा है 12,000 होगा करेक्ट 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 आई एम राइट। तो ये हो गया तीनों के तीनों आंसर्स एग्जाम सम्स था, क्या आपको समझा है? हेलो, समझा है? यस सर। सर थोड़ा ऊपर करेंगे। या और यस सर। बस यस सर। या should I go ahead now? यस सर। Okay, we'll do it in the next session now.